Hello, good evening, अस्सलाम वालेकुम and welcome to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports and Sports and the ARY Zab app and our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. And the news out of Mumbai is that India have moved on to the finals of the ICC World Cup 2023 after defeating New Zealand with a big margin in Mumbai. So congratulations to all the Indian fans. There is a lot to talk about. But before we carry on the conversation, let me bring in the four fantastic people that I have in the pavilion with me. I've got four former captains of Pakistan. First up, a great runner between the wicket, great player of spin bowling, captain Pakistan. I've got Shoaib Malik. Good evening, assalamu alaikum, Shoaib. Good evening, walaikum salam, assalamu alaikum everyone. Next up, I've got Mr. Dependable. I've got the most successful test captain in Pakistan's test cricket history, Mr. Misbah. Good evening, assalamu alaikum, Misbah. Good evening, walaikum assalam, and assalamu alaikum to everyone. Known as a man of crisis in his times, kept wickets for Pakistan, captain Pakistan, great runner between the wickets, and we lovingly call him the Silver Fox of the Pavilion. Good evening, assalamu alaikum, Moin. Ji, walaikum assalam. Good evening, assalamu alaikum everyone. Shair Pavilion and the heavyweight champion of Pavilion, also a rapper, adakar, fankar, kalakar और मुकम्मल तौर पे हर चीज़ पे हावी रहते हैं. The universal royalty of cricket himself, Mr. Wasim Akram. Good evening and assalamu alaikum, Wasim. Sultan, कैसे हैं आप? Good evening, assalamu alaikum Fakhar, assalamu alaikum everyone. I'm very good. I hope आप लोग और सब ठीक ठाक हों. मतलब हम सुबह ही थे साथ में. आप तो ऐसे पूछ रहे हमारे हालात जैसे 6 महीने बाद मुलाकात हुई है. हम सुबह ही थे साथ में. All right, folks, with that, this is what happened. Mumbai. Wow, what a game it was. Let's take a look at the match summary, how this semi-final went down. Semi-final number 1, it was Rohit Sharma of India won the toss, elected to bat, and boy, did they bat. Oh yes, they batted. They pretty much batted New Zealand out of the semi-final. First up, it was great innings by the openers. Rohit there, that 47 set the tone up for the rest of the batting to follow, and they decimated the pedestrian-looking New Zealand bowling today. Sadi there picked up 3 wickets, but look at that. He gave away 100 runs for that, bowled with 1 for 86, and the New Zealand bowlers had really no answers for the Indian onslaught that was coming their way. In response, the openers kind of disappointed. Conway really not getting much, neither did Ravindra, but it was Mitchell and Williamson's partnership that gave hope. In the middle of the innings to New Zealand, it looked like they might just be able to pull this off, but it was not to be because it was a huge total. In the end, New Zealand all dismissed for 48.5. Shami, look at that. Mohammad Shami picking up 7 for 57. It was Mohammad Shami against the entire New Zealand batting order. Well done to him. Kuldeep also there with 1 for 56 and Bumrah 1 for 64. India winning this by 70 runs and marching on to the finals. It seems like, Wasim, it is now India's World Cup to lose because there is no way they can. They go undefeated, still unchallenged, undefeated. They keep marching on. Yeah, deserving candidates to qualify for the finals and to even win it. I understand there's another semi-final tomorrow, but let's talk about India today. It was a complete performance in every aspect of the game. Batting, bowling, fielding, winning the toss, and captain leading it from the front. उसका नाम ज़्यादा नहीं आता रोहित का because वो 100 नहीं किया उसने या 125 नहीं किया या 200 नहीं किया, but पहले जो स्टार्ट करता है, we spoke about him quite in length from last month and so, उसने किया है 40, 29 बॉलों पे 162 के स्ट्राइक रेट से, and that 84 in first 10 overs. And I think that was क्या उसे कहते हैं stepping stone था, प्लेटफॉर्म था कि नीचे से आके Gill played amazingly well. We know how good a player he is, how consistent he has been for India. He's a future for Indian batting after Rohit and Virat. They are still at their peak, no doubt. But look at the shots he played. So pressure gets off. Pressure सारा चला जाता है opposition पे. And the way he starts off, 162, 4 sixes, 4 fours, and then, Gill got 80 as well when they got to 397. Okay, आपने कहा कि एक बड़ा अच्छा आपने लफ्ज़ यूज़ किया, pedestrian bowling attack लगा न्यूजीलैंड का आज. It was the quality of Indian batting, guys, in my opinion. The way they batted, everybody was worried about pitch change, ये वो, the way they are playing. I think उनको तुम उखाड़े पे भी खिला दोगे तो वो उतना ही स्कोर करेंगे. The talent, the confidence,
the leader leading from the front. वो वसीम आप कह रहे थे ना कि अगर ये रोहित का चूंकि 100 नहीं होता तो उसके ऊपर कोई ज़्यादा बात नहीं होती. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जे उन्हें 100 करने शुरू कर देते तो टीम ते फिर 500 लाने शुरू कर देगी. थोड़ा दूजे थे थोड़ा हथौड़ा रखो. That's the beauty of Rohit Sharma. Once he starts in flow, वो रुकता नहीं है. He's not worried about his 50, his 100. Imagine Wasim bhai being a captain and playing a knockout game. Yeah. टॉस जीत के बैटिंग करना, सेकंड या थर्ड बॉल पे डाउन द ग्राउंड जाके डाउन द विकेट जाके बॉलर को टेक ऑन करना. It's a massive deal. It is. You need a lot of courage to do that. I think hats off to him. No question about that. But then, of course, Rohit started the festivities, the run feast that we saw today, and then it was just out. जिस आपने गिल की बात की वो थे तो unfortunate था कि गिल off the field चले गए अपनी इनिंग वो करते तो I think he was also up for a century today. Easy, 66 ball, 80 runs, strike rate of 122, and then he came out to bat as well. Yeah. In the end. In the end, he hit a couple of boundaries there too. So everybody was playing. In this World Cup, Indian team, they're just loving each other's company. The whole country is behind them. Right. They're playing positive cricket. It's just kind of, at times, it's boring for me to watch because it shows it's a one-horse race. That's a compliment, by the way. It really is. Talking about loving each other's company, Misbah, सुन लिया मैं कहना start loving each other's company here. Misbah, ये तो. All right. Let's talk about. 5 minute होता है जो आलंद जरा वो चीज़. Let's talk about the Emperor Virat Kohli. Yep, we now call him the Emperor here in the Pavilion at least. I don't know about the rest of the world, but that's what we've started calling him, and we refer to him as the Emperor. Another century, Misbah? 50वीं century, not just another. 50th century in ODI cricket. Normal सी बात है. It looks like they've made it look these things normal We can now. officially say it's a 600 से normal. ऊपर रन हो गए World Cup में. We can officially say it's normal day for Virat Kohli at the office. Yeah. The way he's बैटिंग और वेल ऑर्गेनाइज इनिंग और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि रोल्स जो डिफाइन है उनके दे नो और कंसिस्टेंसी उसमें चेक करो. आई मीन ही इज़ डिलीवरिंग ऑलमोस्ट एवरी टाइम ही जस्ट कम्स टू बैट. ऊपर से एक प्लेटफॉर्म मिला उसको आके कैसे कैश करना है, कैसे एंड तक ले के जाना है, द वे ही इज़ बैटिंग. और स्ट्राइक रोटेशन है, फिर कहीं बीच में जो स्टील करना होता है बाउंड्रीज and using the different areas of the field, कहीं ना कहीं ऐसे पंच फिर मारना, well calculated और पूरा एक organized किस्म की इनिंग और sense of एक surety और security होती है जब वो strike पे होते हैं या in the middle होते हैं. दूसरी तरफ से बैट्समैन को फिक्र ही नहीं होती कि एक तरफ से तो काम संभला हो ना, 6 रन ओवर 7 रन ओवर तो कोई इशू नहीं है, तो वो दूसरी तरफ से 8 या 9 या 10 रन ओवर का सोच रही होती बाकी सारी टीम. Hunger, dedication, or never gets satisfied with his own performance. Absolutely. Moin, one of the great gestures that Virat Kohli made today was जब उन्होंने अपनी 50वीं सेंचुरी कर दी तो उन्होंने अपना हेलमेट और ग्लव्स उतार के जिस तरफ सचिन तेंदुलकर बैठे हुए थे उस तरफ होके झुके और उन्होंने उनको एक सलामी जो है वो पेश की, bow down to him. And then mid break में we had Sachin Tendulkar and the legendary David Beckham जिन्होंने आकर बड़ी तारीफ की. ये वो मोमेंट है जब उन्होंने ये सचिन जी बिल्कुल. सबसे पहले तो हमारे पूरे पैनल की तरफ से, पवेलियन की तरफ से मुबारकबाद. द वर्ल्ड रिकॉर्ड 50th टन इन इंटरनेशनल क्रिकेट एंड ऐसे ओकेजन के ऊपर लाइक जहाँ खुद सचिन जिसका रिकॉर्ड ब्रेक किया वो बैठा हुआ था. आई थिंक वाज outstanding moment for him. It was. Of course, and even his family was there. You know, I think ये जिस तरह जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक दफ़ा फिर ये इनिंग खेली है, अभी जैसे शोएब मिसबा ने भी बात की है, बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए एंड ई मीन के आज कुछ मैंने ऐसी परफॉर्मेंस ज़रूर देनी है जिससे यू नो इंडिया एक दफ़ा फिर जो है वर्ल्ड कप के फाइनल की तरफ जाएगा. जब सचिन ने 49 100 किए थे, आई थॉट कौन करेगा यार 49. बिल्कुल ऐसी 100 फॉर्मेट में मिक्स करके चलो यू नो यू कैन थिंक अबाउट इट, बट दिस गाय जस्ट केम and he's got a long way to go. And the number of innings, बीच में innings देखें वो 100 से भी मेरे ख्याल में दो ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा है जो कम उनके है. फॉर्म के 2-3 साल कंसिस्टेंटली उन्होंने कहते हैं ना he came, he saw and then he conquered. That's why he's the emperor. There's no two ways around. Even Sachin, the great Sachin, he tweeted
Yeah, I saw. saying कि first time when he came and met me in the dressing room, he touched my feet. नहीं वो किस्सा उन्होंने आज एक्चुअली हाँ, मिड इनिंग्स में बताया है कि वो मजाक के तौर पे लड़कों ने कहा ओहो तुम ड्रेसिंग रूम में आए हो पहले जाके पाँव छुओ आशीर्वाद लो सचिन और सचिन कहते मैं हंस रहा था ये They all were laughing and today he said he touched my heart. These were like big words. Big words. I mean, He was Sachin, you can see the pride in Sachin Tendulkar's Sachin Tendulkar is the god of cricket in India and world cricketing world में on and off the field, true ambassador of the game. And ये जो विराट कोहली या उसके बाद की generation है वो बड़े ही सचिन तेंदुलकर पे हुए in India. And he's still considered. How important it is to have a hero like Sachin Tendulkar to inspire a whole generation of people like Virat Kohli and Rohit Sharma and Iyer and the Shubman Gill and all Rahul, everybody. All of these guys. It's so important to have role models in any way of your life as a young kid to follow, and he has been a prime example for any young budding cricketer, not just in India. I'm talking about worldwide. That's great, Sachin. Worldwide. Well, Emperor Kohli, well done, congratulations, and congratulations to all the Indian fans around the world celebrating. It's going to be a great final for India, and as I said right at the beginning, it is now only India's World Cup to lose. We're going to take a break. When we come back, there's more in the Pavilion. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. You're watching A Sports and Sports in the Airways app. The continued coverage of the ICC Men's World Cup. And the news is that India is going to play the finals in the 2023 World Cup. New Zealand, well, they'll have to go back home again. Well, so they're going to go back to New Zealand. You said they live in a semi-land. I know, they look like they live in a They haven't semi-land. won a World Cup, either ODI or T20 as yet. They've been unlucky. I think last time, 2019, was a close call with the loss to England after super over के बाद जब वो boundaries पे decide हुआ था. But let's talk about Indian bowling now, Yeah. So we spoke about Gill, we spoke about Virat Kohli, we spoke about Rohit. Now let's talk about this young kid, Iyer, man. This is the next generation of Indian cricket, and they're already looking so deadly. How do we go about tackling with this in the future, Malik? I think अगर उनके पूरे बैटर्स देखें तो they are in great form. मुझे लगता है 50 ओवर नहीं, इनको ज़्यादा ओवर देने चाहिए खेलने के लिए ताकि सारे खेल लें. और एक इनिंग में 1000 रन भी लगा दें वो बोर्ड के ऊपर. I think Shreyas Iyer, he's been scoring runs. A lot of people were discussing that he struggles against the short ball. Now I've seen his press conference where he said कि आप लोग ऐसे ही वो बना देते हो. But he showed, and even when he was giving an interview, उसमें भी you could see the confidence being a youngster. और जिस बैटिंग लाइनअप में रोहित हो, शुभमन गिल हो, विराट हो, केएल राहुल हो, और उसमें आके आप अपने आप को मनमाएं और वो consistently runs बनाएं. Asia Cup में he got injured before Pakistan game, so they had to play Ashan Kishan, who got 70 odd runs against Pakistan under pressure. That's what we talk about. When you invest in someone as a batter, you got to invest him for a long run, and now they are उसको advantage मिल रहा है. ऐसे नहीं करते ना वसीम भाई, जब वो किसी पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो उसको ऐसे नहीं जाने देते. अगर उसकी जगह कोई आ भी जाए, रन्स भी बना ले या विकेट्स ले ले, तो वो उसको ऐसे नहीं जाने देते. वो होमवर्क करते हैं, लॉन्ग रन का करते हैं. उन्होंने होमवर्क किया हुआ है, इसीलिए उन्होंने जो है 10 मैचेस जीते हैं. उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उन्होंने अपने प्लेयर्स पे इन्वेस्ट किया है. इंजर्ड भी हुए हैं, बुमराह जो थे, केएल राहुल थे, ये श्रेयास अय्यर थे. उन्होंने इनका प्रॉपर रिहैब कराया, इनको प्रॉपर टाइम दिया, और फिर जब वो फिट हुए वापस उनको टीम में लेके आए. और ये देखिए, थ्रू प्रॉपर चैनल जब भी आप कोई चीज़ करेंगे तो ऐसे रिजल्ट्स आएंगे. यू विन 10 out of 10. वो ऐसे रिजल्ट्स आएंगे, कंसिस्टेंटली आएंगे, और कंसिस्टेंटली जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी परफॉर्मेंस देंगे. बट क्रेडिट गोज टू देयर मैनेजमेंट के अय्यर का जो बीच में थोड़े से उनके मैचेस अच्छे नहीं गए. इस वर्ल्ड कप में भी वो स्कोर नहीं कर रहे थे, और वो पता चल रहा था शॉर्ट बॉल पे स्ट्रगल कर रहे हैं. दे स्टक विद हिम, द टीम, द मैनेजमेंट, द कैप्टन. सेंस ऑफ सिक्योरिटी जब आपके अंदर आ जाता है ना, कि आपको पता लग रहा था कि आपकी मैनेजमेंट, आपके कैप्टन आपको सपोर्ट करे, तो देन आप खुल के खेलते हैं, अपने फुल पोटेंशियल के ऊपर खेलते हैं. वही चीज़ प्लेयर को एक फर्दर स्टेप अहेड लेके जाती है अपने कैरियर के अंदर. एंड जिस तरह आई थिंक बैटिंग की है श्रेयास ने, नज़र आता है कि वो हर बॉलर को टास्क करता है, चाहे वो कोई भी बॉलर, मेन बॉलर हो या ना मेन बॉलर, स्ट्राइक बॉलर हो या ना हो. ये क्वालिटी होती है ना, आपके साथ जो ओपोनेंट
खेल रहा होता है, जो नॉन स्ट्राइकर पर, उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, देन यू कैन always plan your inning also. And Moin, with time he will only get more experience and more lethal. ये खड़े खड़े जो छिक्का मारता है स्पिनर को और फास्ट बॉलर को, बल्ला इसने हैंड एक्सटेंशन में कहते हैं मोटे ही रखे होंगे। हमारे पास ये स्टैट नहीं आया, पर मैं कहीं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, 500 रन एक तो कंप्लीट किए, और शायद फर्स्ट 3 नंबर्स के बाद ये पहला है बैटर जिसने 500 रन किए वर्ल्ड कप में। थिंक टैंक की बात कर रहे थे ना अब कर ले बात, फिर मैं आप थिंक टैंक की बात कर रहे थे, तो उन्होंने अगर थिंक टैंक आपका किसी पे इन्वेस्ट करता है और उसको इंजरी हो जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए, तो उसके बाद अगर वो उसको नहीं खिलाते हैं, तो इसका मतलब है थिंक टैंक जो है वो केपेबल ही नहीं है इस चीज़ के, कि इन्वेस्ट किया किसी पे और आपने फिर उसका हाथ छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। दिस इज़ वाई दे आर कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग। और जब आप, इसीलिए मैं कहता हूँ पूल ऑफ प्लेयर्स होना चाहिए आपका, वो आप उन पे जब इन्वेस्ट करते हैं, आप उनको पूरा चांस देते हैं, उन पे अप्स एंड डाउन फेलियर जरूर रहेंगे। किसी ने साल या एक टाइम रखो पूल ऑफ प्लेस का कि साल से 2 साल या 1.5 साल में इनमें से हमने ट्राई करने हैं, अगर परफॉर्मेंस किसी की नहीं होती देन विल ब्रिंग नए वाले। 2 साल 1.5 साल तो चांस देना। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जब मार्कस ट्रेस्कॉथिक इंग्लैंड के जो बैटर हैं और माइकल वॉन, ये जो इंग्लैंड के बैटर्स हैं, जब इनको नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट किया गया था, तो इनका दोनों का एवरेज जो था 30 का था डोमेस्टिक क्रिकेट में। बट वो जो आए थी, जो करते धरते थे, उन्होंने बोला कि नहीं, दे आर केपेबल इनफ to compete at a higher level, and we have seen कि how they performed at a higher level। तो वो आँख भी होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सिर्फ स्टैट्स के पीछे चले जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। True. मिसबाह, how I mean the mindset का अगर आप डिफरेंस देखें, यूँ लगता है कि जैसे इंडियन क्रिकेट जो है वो अपने प्लेयर्स को एज एन एसेट ट्रीट करती है, और उस एसेट में अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, जिस तरह कोई एसेट मैनेजर होगा ना, बिग एसेट मैनेजमेंट फर्म, दे विल इन्वेस्ट इन एन एसेट, इफ द एसेट डजंट परफॉर्म, इज नॉट गिविंग देम द रिटर्न्स, दे विल गो इन देयर टू फिक्स द एसेट एंड देन मेक इट अ परफॉर्मिंग एसेट सो दैट रिजल्ट्स आर रीप्ड। एंड दैट शोज। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की मलिक ने कि जी वो बुमराह गए, इंजरी में गए, वापस आए, केएल राहुल इंजरी में गए, वापस आए। लुक एट इट, नॉट ओनली डिड दे कम बैक इनटू द टीम, it looks like Wasim, they came back much fitter, much more informed, much more developed skill. They got looked after. They got looked after. Mentally, physically, financially too. Yeah. No stress. No a change in the cricket board in a way, अगर है भी है तो it doesn't matter, वहाँ तक बात पहुँचती नहीं है। वो ऊपर से जो चेंज होता करके वो आते हैं, टेक ओवर होता होगा। I don't know the system there. सिंपल जो आपने भी देखा वहाँ काम, आप वहाँ बहुत रहे हैं IPL में, प्रोफेशनलिज्म इन एवरी प्रोफेशन। जो सबसे बड़ी चीज़ है प्रोफेशनलिज्म, वो हर चीज़ को, जब हमारे साथ भी जहाँ पे भी काम करते हैं आके, उनके फिजियोज काम करते हैं डिफरेंट लीग्स में, वो प्रोफेशनलिज्म, और प्रोफेशनलिज्म ही ये सारी चीज़ें हैं कि अगर कोई इंजरी हुई है, किसी को कोई प्रॉब्लम आई है इन टर्म्स ऑफ हिज स्किल, उस पर कैसे काम करना है, उन्होंने कम्पीट करना है उस पर। अब देखें पीछे जो थोड़ा बहुत एक डाउनफॉल आया था आफ्टर युवराज सिंह, सुरेश रैना, जब ये थोड़ा सा नीचे से परफॉर्मेंस नहीं हुई और ये गए हैं टीम से 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी, तो लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं डाल रहा था। राइट। बट द वे दे जस्ट डेवलप देयर टीम कि केएल राहुल को वो नीचे लेके आए। अब ऊपर वाले 3 के साथ जब ये अय्यर, केएल राहुल ये आते हैं चौथे 5वें पे, वो मैच विनर्स जैसे युवराज इनको जिताता है, या धोनी, MS धोनी 6 नंबर पे आके करता था, अब वो वाली स्ट्रेंथ इनकी बन गई है कि टॉप 5 बैटर्स या 6 बैटर्स भूल रहे हैं जिसका हार्दिक पांड्या, नहीं पांड्या तो चलो ठीक है, बट जिसका एक्सीडेंट हो गया था ऋषभ पंत, व्हाट अ प्लेयर ही इज। वो अभी फिट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, उनका मैंने ट्वीट पिछले दिनों पढ़ा कि बैक टू रिकवरी, थोड़ी रनिंग भी शुरू कर दी है। पूल ऑफ प्लेयर्स, पूल ऑफ इंजर्ड हुए हैं ना, ऋषभ पंत, वो ऐसा प्लेयर है कि जब रेडी होगा he'll be ready to play in playing 11। Also goes back to another thing, Wasim, and when we look at this, वो हम मजबूर हो जाते हैं, हम फिर पाकिस्तान का भी सोचना शुरू हो जाते हैं, but look at the bench strength that they had, and then they are not afraid of trying the bench strength। हमें तो यहाँ पे ये मुसीबत पड़ जाती है पाकिस्तान में, अगर बेंच स्ट्रेंथ पे आना पड़ जाए तो मामला तो फिर इफ्स एंड बट्स और हूँ है, अच्छा इसका ये वो हम ट्राई नहीं करते।
करेक्ट। पिछले 4 सालों में कितने ट्राई किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो थिंक टैंक थे या जो भी चलाने वाले थे, कितने लड़के छोड़ के गए हैं, कितने बना के गए हैं, नहीं पता। वही चीज़ है ना वसीम भाई के, एक तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कोऑर्डिनेशन हो आपस में, नीचे शाहीन्स के लड़के या नीचे से जो सिलेक्शन कमेटी जो लेके आती है लड़के, कैसे उनको खिलाना है, आपके बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, अच्छा ये रिप्लेसमेंट है, इसको हमने खिलाना है, फिर आप एज अ होल वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करें। यहाँ पे होता है क्या है कि जब डेवलपमेंट के लिए कोई भी प्लेयर खेलता है तो फिर अगर तो वो अच्छा कर जाए तो हर कोई उसको ओन करने के लिए आ जाता है, लेकिन अगर वो नहीं करता तो उसको ओन कोई नहीं करता, वो कप्तान पे डालेंगे या सिलेक्शन कमेटी किसी न किसी पे, मतलब तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में बड़ी ज़रूरी हैं आपको आपस में। अगर क्रिकेटर को आपने चीफ सिलेक्टर बनाना है या सिलेक्शन कमेटी में क्रिकेटर्स ने रहना है, तो अगर उन्होंने स्टैट्स देख के टीम बनानी है तो फिर कोई बंदा भी ले आओ, फिर आपको क्रिकेटर क्यों चाहिए? क्रिकेटर का आप ऐसा केपेबल होना चाहिए और स्टैटिस्टिशियन ले आओ जो आके उसको कर दे, से पहचान सके भाई। चीफ सेलेक्टर शुड बी द गाय who should be traveling every kind of game in first class coordination with his selectors कि तुम इस साइड पे जाओ, मैं इस साइड पे जाऊंगा, पूरे 6 महीने they should be sitting in one place, they be traveling every game, that's how it works with chief selection. I agree with you. श्रेयस अय्यर ने आज अपनी 100 बनाई है, this is back to back 2 centuries in the World Cup. Interestingly, राहुल द्रविड़ ड्रेसिंग रूम में मौजूद हैं, उनके पास भी ये रिकॉर्ड है। रोहित शर्मा इनके साथ हैं टीम में, उनके पास भी ये रिकॉर्ड मौजूद है, and now he is the third one in there. Now question is, when you are in that environment, the company that you keep, कहते हैं ना man is known by the company he keeps, वो तो यूँ लग रहा है कि उस ड्रेसिंग रूम में हर किसी के जो है ना कोई रिकॉर्ड का जो है ना वो एक हंगर रहती है कि यार मैं ये आपकी इजाज़त तो पाए मैं ये रिकॉर्ड बना लूँ, ये इट्स लाइक यू नो मी उसी में इजाज़त तो मैं ये रिकॉर्ड बना लूँ। अपने इंडिविजुअल गोल्स भी तो होते हैं ना, हर प्लेयर अपने स्टैंडर्ड सेट करना चाहता है, यू नो, एंड द स्टैंडर्ड जो पहले से बने होते हैं उनको कम्पीट करके आगे निकलना चाहता है, यू नो, दैट्स हाउ द पीपल नोन, लाइक प्लेयर्स को इतने अरसे याद रखते हैं। वसीम भाई की हम बात करते हैं, ग्रेट सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, वकार यूनुस की बात करते हैं, इन लोगों ने एक लेगेसी छोड़ी है ना, अपनी एक परफॉर्मेंस, एक स्टैंडर्ड छोड़ा है। तो वहाँ पे नेशनली जब आपके ड्रेसिंग रूम में, लाइक मैं अपनी छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा, जब नया मैं टीम में आया था, बहुत सारे परफॉर्मर्स थे, बड़े बड़े, वसीम भाई थे, वकार ऑलरेडी बड़ा परफॉर्म करता, मुशीब वाज अ गुड परफॉर्मर, यानी टू हैविंग देयर कंपनी यू हैव टू परफॉर्म। ये वरना करीब ऐसा हो जाता है अंदर जाके, यू नो, बिकॉज़ आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, I guarantee you. आप खुद भी कंफर्टेबल फील नहीं करते ना, यू नो, वो फिर वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपका वो नहीं होता, और जब आप परफॉर्म करते हो नेचुरली वो चीज़ गेन करती है। वो ही आपके जो प्लेयर्स होते हैं जिनको इंस्पिरेशन लेके आप खेल रहे होते हैं, वो आपको जब कंधे पे हाथ रखते हैं, शाबाशी देते हैं, यू नो, फिर ऐसी परफॉर्मेंसेस होती हैं। और वो आज देखी श्रेयस ने जिस तरह की इनिंग खेली है, 150 के स्ट्राइक रेट से इनिंग खेली है, तो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट इनिंग। आई थिंक 8 छक्के मारे हैं उन्होंने, तो उससे विराट कोहली को भी बहुत लाइक वहाँ पे हेल्प मिली है, दूसरे एंड से बिल्कुल, दूसरे एंड से कहीं भी रन्स किसी वक्त भी, अगर एवरेज देखें आप 7.94 का एवरेज फिनिश किया है, तो कहीं भी इससे नीचे एवरेज ही नहीं आने दिया है। विराट कोहली की एक दफ़ा फिर ये बात आ गई है, तो ये भी मैं पूछ रहा हूँ मिसबा, कीपिंग इन माइंड कि जितने कम ओडीआईज अब हो रहे हैं, ऐसा ऐसा कम होते जा रहे हैं ना ओडीआईज, हाउ डिफिकल्ट वुड इट बी फॉर समवन टू इवन कंसिडर ब्रेकिंग? और माइंड यू अभी ही इज नॉट डन, विराट कोहली स्टिल हैज अ लॉट ऑफ इयर्स ऑफ क्रिकेट इन फ्रंट ऑफ हिम। वो किसी और नए बंदे के लिए मतलब किस किस्म का डॉन्टिंग टास्क है कि भाई मैं करने 50-100, you're not getting the ODIs either. It's going to be difficult. कोई इंडिया नहीं करेगा, अगर करेगा तो जैसे शुभमन गिल है, क्योंकि ये खेलते हैं, ये नहीं करते कि ये एक फॉर्मेट को ये भूल जाते हैं। ओवर द टाइम इनको पता है कि 4 साल बाद वर्ल्ड कप खेलना है हमने, तो एक सर्टन नंबर ऑफ ODIs ये खेलेंगे अपनी टीम को डेवलप करने के लिए। बाकी जो भी है वो जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ ना, जितने भी टीमें खेले वो कमर्शियल बेसिस पे 2020 ज़्यादा खेलेंगे, अर्निंग ज़्यादा है, ठीक है जी, कमर्शियल एस्पेक्ट है, टेस्ट मैचेस कम है, ये एक सर्टन नंबर के टेस्ट मैच भी खेलेंगे, डजेंट मैटर T20 वर्ल्ड कप है या नहीं है, ODIs भी खेलेंगे, होम सीरीज़ में इनके ठीक ठाक मैचेस होते हैं। तो आई थिंक वही चीज़ कि इनके पास चांसेस हैं। शुभमन गिल नाम सुने ना आपने? नहीं यार, किसी ने नहीं सुना। किस किस्म का ये सवाल कैसे फ्रेम करने का? सुने ना मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपने खेलते हुए देखा है? नहीं देखा, बट नाम नहीं जाता कहीं ना। अच्छा, नहीं जाता ना, इनका भी नहीं जाएगा। मुझे नहीं लगता कि 50 जो है
and he's still playing. I know. Thanks, Shoaib. Appreciate that. All right, with that, we're going to take a break. But when we come back from the break, we're going to talk about the New Zealand batting effort and the destruction that Mohammad Shami caused today. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhar-e-Alam. Aap dekh rahe hain Sports and Sports in the Airways app, our continued coverage of the ICC World Cup. India is in the finals. But today, when they put up that mammoth total, it was New Zealand that were put under a lot of pressure right from the word go when their batting started. Wasim, clearly the difference to start with on the batting card would be the way the New Zealand openers went about the business. वो 1 मिनट के लिए लगा था बुमराह को 2 चौके मारे थे पहले ओवर में कॉनवे ने मगर उसके बाद there was really nothing. They both Rachin as well and Conway looked very kind of not sure. A mammoth total to achieve that target. 400 runs, 399 to be exact, and that too in a knockout game. I think इनकी partnership hope आई थी इनको जब थोड़ी partnership लगी between Kaptan Williamson and of course Darren Mitchell, who scored beautiful 100 of 119 deliveries, strike rate of 112, and people thought के chance है, but I knew deep inside it's just a matter of time. Although ball भी गीला हो रहा था, जबरदस्त इनिंग खेली मिचेल ने और केन विलियमसन ने, दोनों तरफ शॉटें खेली, पार्टनरशिप भी ज़बरदस्त लगी इनकी और इन्होंने 11 से 40 के दरमियान किया भी 220 स्कोर सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर। थोड़ा चांस बना वहाँ पे, बट आई वाज थिंकिंग कि 1 विकेट मिली प्रेशर दोबारा पड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल वही चीज़ है कि आप, मुझे लगता है कि वो 40 रन 40-50 रन ऐसे थे जो डिसाइसिव थे बिल्कुल। बट द वे दे बोथ बैटेड, आई थिंक फ्रॉम दैट सिचुएशन 397 और उसको चेस करते हुए 2 आपके की प्लेयर अर्ली आउट हो जाए, इन फॉर्म बैट्समैन रविंद्र आउट हुए, बट उसके बाद जिस तरीके से लेके गए मैच को और डोमिनेट किया, स्पेशली मिचेल, आई मीन ही इज़ द वन हु इज़ टेकिंग ऑन ऑल द बॉलर्स। मोहम्मद शामी जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे और बुमराह को जैसे आके चार्ज किया उन्होंने, वो एक होप दिलाई। आई थिंक दैट वाज स्पेशल इनिंग फ्रॉम हिम। विलियमसन शुरू में स्टार्ट में वो 18 बॉलों पे 4 था, बट ही न्यू कि है इसको डीप लेके जाना है। थोड़ा सा बॉल जब कहीं ना कहीं ड्यू फैक्टर आएगा बेहतर, शायद हमारा चांस बन जाए, और एक आउटसाइड चांस क्रिएट हो भी गया था। बट आई थिंक थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होंगे विलियमसन उस टाइम पे। उनका भी अगर 100 होता तो then it could have been slightly more closer. But I think we got to talk about the sensation of this World Cup. Yeah, Shami. yeah. The whole, not just the semi-final, but the whole World Cup. Yeah. Mohammad Shami has been absolutely spectacular. He became the first bowler in the history of the World Cup who's got 4 fivers. Yeah. In the World Cup games. हमारा एक भी नहीं है, but that's a massive deal. He's got 50 wickets in only 17 games. Yeah. And what a performer he has been for India. 23 wickets in this World Cup at age of 19, just over 19, और crucial matches में knockouts में 7 wickets today. Yeah. 1, 2, 3, 4 ठीक है, but 7 is big. The minute he came out, the length bits we talk about. ये स्पेशल चीज़ जो है कि लेफ्ट हैंडर को राउंड द विकेट आते हैं तो आंखें बंद करके आप समझें कि बस विकेट जाने वाली है। So he came and he just got 2 wickets there, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट्स थी, क्योंकि ये लेफ्ट हैंडर अगर रहते तो थोड़ा सा इनके लिए और मुश्किल, जो हम बात कर रहे थे कि जडेजा ने क्योंकि बीच में बॉलिंग करनी थी और इतना बड़ा टारगेट था, तो यहाँ थोड़ा इनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है होती। बट द वे ही बॉल्ड, आई थिंक दैट वाज की अर्ली ऑन ब्रेक थ्रूज एंड देन ही जस्ट kept getting those wickets. ये जैसे ही लेफ्ट हैंडर आया राउंड द विकेट, दोनों तरफ सीम हो के बॉल जाता है। वो वाली एग्जांपल है अभी इन्होंने दी ना मिसबा भाई ने, लेफ्टी बैटर आ जाए, ही गोज राउंड द विकेट और फिर वहाँ से बॉल बाहर निकालते हैं। ये वही है, ये कोई अगर क्लब का मैच खेल रहे थे तो दूसरे एंड पे ना ओपन नहीं कराते थे उनको। Very nicely ball there by Mohammad Shami. Just outstanding bowling there. Something that many people will remember for a very long time. Yeah, you got to it. Should be finished. Yes, sorry, Shoaib. Yes, go ahead. वही वाली स्टोरी है कि एक थे बंदे, वो कहते थे मुझे रोज ओपन कराओ, क्लब के मैच में कराओ, नहीं कराते थे। एक दिन आ गया दूसरी तरफ से बड़ा तेज बॉलर, उनको करा दी ओपन, वो भी आगे से तेज थे।
स्ट्राइक नहीं ली उन्होंने, नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े रहेंगे, मैं चेक करूँगा आज इन्होंने ओपन क्यों करवाई है। अच्छा उन्होंने चेक किया, पहला बॉल गया ना जो स्ट्राइक पे था बैटर उसके यहाँ से, तो अंपायर को कहते हैं चंगा नहीं कीता तू आज सानू ओपन करा गया, अंपायर अपने होते हैं ना। उसके बाद दूसरा बॉल फिर गया ना यहाँ से, तो उसे कहते हैं मैंने इधर ही आउट दे दे। नॉन स्ट्राइकर एंड पे ही आउट देना मुझे, आई डोंट वांट टू फेस। ये बोलना ना कि लेफ्टी आते हैं तो बस लेफ्टी सब के यार मैंने उठे आउट दे दे, तू अंदर जा। मन्नो बलवान ने उन्होंने क्या यार तू उधर जाएगा तो मैं आउट देगा, कहते उधर जाके तो मैं हो ही जाना, तो अंपायर कहता है इधर आउट Coming back to this boy, 5 for 57, best ever figures for India in the World Cup history as well. So he's created lot of records and one more game to go. I know. And then वो post match में उनको सुन रहा था मैं उनका। Yeah, I enjoyed his bowling. I do enjoy looking at him, the way he bowls. जैसे Misbah ने कहा, left-hander को straight away round the wicket, seam, always asking question, drive मारूं, back foot पे जाऊं, और within the stumps खत्म होता है उसका ball. एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उनकी, आप नहीं मैं बस वो नहीं कहने लगा था, मैं कह रहा हूँ 4 कॉट बैंड भी हुए उनकी बॉल के ऊपर, यू नो इट शोज कितना एक्यूरेट था एंड प्रॉपरली विकेट्स लिए। बिल्कुल उसी मैंने कहा मारते हुए कोई ऐसे कोई फ्लूक में नहीं आज विकेट नहीं ही सेट देम अप, ही वाज रियली। एक चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यंगस्टर्स को ज़रूर जो है ना नोटिस करनी चाहिए। एक रविंद्र जो न्यूजीलैंड वाले रचन, उनकी चीज़ ओपन कराई 3 नंबर खिलाया, ओपन कराई 3 नंबर खिलाया, उन्होंने अपनी चीज़ पे फोकस रखा। मोहम्मद शमी का भी यही है। मोस्टली क्या होता है प्लेइंग इन द एशियन कंडीशंस, जहाँ पे बॉल नया बॉल ज़रा ज़रूर हिलता है, सेमी न्यू इतना नहीं हिलता, बट उनको अपॉर्चुनिटी मिली, सेमी न्यू बॉल पे मिली, बट उन्होंने सिर्फ फोकस रखा कि मैं यहाँ पे बेस्ट क्या कर सकता हूँ। हालांकि वो पूरी दुनिया में लीके भी नहीं खेलते। Leaking. Sorry, Misbah, let me ask you this. Do you think that New Zealand missed a trick there by not, because Latham जो थे वो throughout इस World Cup में कोई ज़्यादा खास उनकी वो नहीं रही, but maybe नीशम, चूँकि मैंने आज सुबह प्री मैच में भी जब हम बैठे हुए थे यहाँ पर आपसे मैंने पूछा था कि maybe नीशम should be there. You think that maybe that was a bit of a issue there? चैपमैन खेलते हैं या नीशम खेलते हैं, लेथम तो उनके मेन प्लेयर हैं, मिडिल में स्पिनर को अच्छा खेलते हैं और वाइस कैप्टन भी हैं। जब नहीं थे विलियमसन तो वही कप्तानी भी कर रहे थे, तो इनका जो चेंज होती है वो यही होती है कि जिम नीशम, मुझे लगता है कि मैं समझता था कि इस ग्राउंड में शायद उनको खिलाते। चैपमैन की परफॉर्मेंसेस बहुत हैं और आज शायद उन्होंने देखा है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर भी उनके खेल रहे हैं, इम्पोर्टेंट होंगे, और नंबर 7 पे वो स्पिनर को थोड़ा बेहतर भी खेलते, तो इसलिए शायद उनको खिलाया है। बट दैट कुड हैव बीन, आई मीन 50-50 था, कोई इतना मुझे लगता है कि मेन बॉलर्स की जो परफॉर्मेंस थी दैट बेसिकली हर्ट न्यूजीलैंड। आपके मेन बॉलर 10 ओवरों में टिम साउदी 100 रन, बोल्ट 86, फिर लोकी फर्गूसन को भी 8 पॉइंट समथिंग के साथ रन हुए हैं, तो दैट वाज आई थिंक one area which damaged them. They missed Henry. He was bowling really well. बिल्कुल वो जो मुझे लगता है कि जो स्विंग वो कंडीशंस हैं थोड़ी सी बाहर की, टिम साउदी वहाँ पे नए बॉल और इवन मिडिल में इफेक्टिव होते हैं, यहाँ इतनी फ्लैट कंडीशन में 130 132 इस पेस पे हेनरी वाज बॉलिंग अबाउट 140 प्लस, और वो भी मोहम्मद शामी की तरह उनका गेंद सीम होता है। यहाँ पे इंडियन कंडीशंस में जो सीम जिसकी हिट होती है वो बॉलर वो मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता, तो आई थिंक दैट वाज अ बिग मिस फॉर देम। पोस्ट मैच में कैप्टन जो केन विलियमसन थे उन्होंने कुछ मेंशन किया मैट हेनरी का? मैं सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग चुप ही नहीं सो रहे। हाँ, सिर्फ ये मैसेज ही था एक, हम लोग जो है वो एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, वो नहीं ढूंढते। नहीं, we are just talking about it. I mean, you're talking about our cricketing culture where we are from. Actually, Shoaib is making a very meaningful point here. I understand where he's coming from. उन्होंने कप्तान ने उसको कह दिया कि you let us down at a very important time. No, I'm saying हम कह रहे हैं in a bigger kind of picture. He was bowling really well. That injury must have. नहीं, ये हमारे लोगों के लिए मैसेज है कि जो इंजर्ड हो गया वो चला गया नहीं, जो बेस्ट आपके पास रिसोर्सेज हैं, यू गॉट टू फाइट टिल द एंड। ये मैसेज है कि मतलब उनके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, दे फाइट टिल द एंड। Yeah, that's how it is. That's how it's supposed to be. And with that, we're going to take a break here in the Pavilion. When we come back, there's more. Stay with us.
Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports and Sports in the Airways app, and we are talking about the India-New Zealand semi-final. India won that and have marched on to the final. It's Rohit Sharma. He's got one hand on that World Cup coveted trophy. It's now going to be a very interesting final. Well, tomorrow is another semi-final. We'll talk about that momentarily. एक सवाल है मेरा वसीम. So, you know, do you think that Hardik Pandya getting injured and Shami coming in has been a blessing in disguise for India? We can say that, Yeah. but again, प्लानिंग थी उनके पास कि अगर ये कुछ होता है तो वी हैव बैकअप प्लान. Right. और उनके जो एक्स्ट्रा प्लेयर थे उनकी जगह स्ट्रेट वे प्लेइंग 11 में आती थी. जो भी 3-4 बार बैठे हुए थे, दैट्स व्हाट एक्स्ट्रा प्लेयर का मतलब है. Yeah. बैकअप ये कहते हैं इसको. एंड आई थिंक एवरीथिंग वर्क फॉर द प्लान. ये प्लानिंग अभी से नहीं हुई, बड़ी पहले से हुई हुई है. Yeah, they were at it. So earlier this morning we heard this strange controversy कि जी कोई pitch change हो गई, ये हो गया. We finally received a clarification from the ICC saying that everything is in accordance and according to normal standard operating procedures. But let me ask you this, Misbah. What do you think? How did the pitch play? I thought it was a very good batting pitch. I think both teams got an even opportunity on it. बहुत अच्छी पिच थी. I mean, after the game, मेरे ख्याल में one-day pitch जैसी होनी चाहिए. Right. Perfect one-day pitch थी. कोई ऐसा गेंद स्पिन हुआ है या uneven या slow. I think it helped the batsmen. ये तो पूछने नहीं चाहिए 700 रन्स बन गए एक पिच पे ODI क्रिकेट में. No, I thought because just sometimes clarity for the viewers, our viewers who do not, because a lot of people latch on to, unfortunately, a lot of people latch on to negative things. The one thing I've learned in my 57 years of life, in last 2-3 years experience with social media, every news you have to double, triple check. Yeah. Sometimes most of the times it's a fake news. And you come like सुबह जैसे मैं बस रचन की बात कर रहा था, वो किसी ने मुझे रचन का लिंक भेज दिया है. और वो मैंने सुनी थी बात माइकल वॉन से सुबह उसके पॉडकास्ट में. He said कि उसके डैड ने कहा कि नाम उस पे नहीं है, but Rachin himself said for ICC interview कि his dad That's what I'm saying. Yeah, and I messaged you as well. I ignored your message. I know you did. But I said I apologize. Moin said comment on it, please. He was a naughty one. वैसे ही वसीम भाई हम लोग रोज बैठते हैं, कोई ना कोई चीज तो ऊपर नीचे होगी. ये बता दे उनको कि 1.5 महीने तो बैठे हुए हैं 4-4 घंटे. एक कदी गलती हो जाए तो माफ कर दिया करो, बड़ी मेहरबानी ताड़ी. Unforgiving. The people, the audience are unforgiving. किसी ने क्या लिखा है, इमेजिन हम महीने से बैठे हैं, 1.5 महीने से कितने शो कर लिए होंगे, 90+. मैं जूते एक ही पहन के आता हूँ ना, जूते नजर नहीं आते. किसी ने मेरे जूते देख लेते हैं क्या आप जूते एक पहनते हैं रोज. ये तो शुक्र करें जूतों तक बात खत्म हो गई है. क्या शुक्र करें जूतों तक बात खत्म हो गई है. जो पिच की हम सुबह बात कर रहे थे, जो मलिक भी बात कर रहा था कि वो जो एक फैक्टर आ रहा था कि जो पहले बैटिंग कर लेता है उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है प्रीवियस जितने भी मैचेस हुए. तो शायद उसको ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा अगर ग्रास कम किया है, और वो आई थिंक वो नजर आया है कि दूसरी टीम के पास भी इक्वल चांस था. बॉटम लाइन इज इट वाज अ फेयर पिच एंड इट वाज फेयर प्ले ऑल द वे. एब्सोल्युटली फेयर था. सिर्फ वो जो एक एलिमेंट था जो दूसरी टीम जिसने भी सेकंड बैटिंग किया जल्दी आउट हुए हैं, उसको फेयर चांस देने के लिए दोनों टीम्स को कि अगर कोई टॉस हार जाए तो वो ये ना हो कि मैच ही हार जाए. करेक्ट. उसके लिए आई गेस आई थिंक इट वाज एक्चुअली अ गुड डिसीजन टू मेक श्योर दैट बोथ टीम्स गेट एन इवन चांस. इट हैज टू बी अप्रिशिएटेड. अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग भी करती तो स्टिल वही टीम जीतती जो और डे बेहतर खेलती. आई थिंक कुछ भी टॉस या कोई ऐसा एडवांटेज किसी को नहीं गया. इंडिया प्लेड बेटर क्रिकेट, बैटिंग भी उन्होंने बेहतर की, बॉलिंग भी, सो दे वन. All right, Wasim, what do you think should be the way forward for New Zealand? You're an idiot. ब्रेक में मोइन को तैयार करा के वे फॉरवर्ड ते पूछो मेरे को ले आया. And I'm not prepared, but I can come up with something. Second before. आपने याद रखना है अब. भाई जवाब दो, चलो शाबाश. ये मुक्के का बदला लिया. हाँ, I swear. मुक्के का बदला लिया. ये बदला याद रखता है भाई. Way forward for New Zealand is they have a pool of players they just have to invest more in young players. Obviously, as Tim Sadi kind of had his time in ODI cricket. His pace, his experience is very much there. He might be very good in T20, but 50-over game, I think they'll know what they're doing, what they went wrong. Injuries they didn't help their cause, but overall,
जितने भी वर्ल्ड कप उठा के देखने वाइट बॉल में दे आर डेफिनेटली अप देयर आइदर सेमीफाइनल और फाइनल और जीते कोई नहीं अभी तक ना वर्ल्ड कप ना T20 वर्ल्ड कप ना ODI बट दे आर ऑलवेज अप देयर दे हैव अ प्रॉपर सिस्टम गोइंग That was not that bad. Now he's covering up. Now he's covering up. I know. I didn't cover up. But I just said please that's remember this. What he's done to कोई you. cover मैंने कहा that wasn't that bad. Was it bad? एक No, promo Then why are you saying I'm covering up? There's nothing to cover up. I just No, said it has nothing to do but what he said. मैं बता रहा 2 मैच रह गए तू खैर बना अपनी में दस एक promo और बनवा लेते हैं फाइनल से पहले एक फाइट और है एक फाइट डी है एक promo और बनवा लेते हैं एक प्रोमो और एक्चुअली प्रोमो से याद है क्या प्रोमो हमारा रखा हुआ है हमारे पास इस वक्त यार है क्या वो जो मुक्का मैंने खाया है प्रोडक्शन जरा चलाइएगा जरा दिखाइएगा ये जरा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं इन केस यू मिस्ड आउट दिस प्रोमो दिस इज द प्रोमो वेयर वसीम I doubt they missed बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि मुझे जिसने मिस किया उसका मतलब कि वो अब्दी नींद सो रहा है जितना का हम दिखा चुके हैं ये सोशल मीडिया अब सेगमेंट क्लोज हो गया अब हम चलते हैं जिस प्रोमो की हम बात कर रहे थे इस प्रोमो में दीज पीपल गैंग्ड अप जो पिटने के लिए मैं ही रह गया हूँ इस पूरे पेविलियन में थ्रू आउट पहले दिन से मैं पिट रहा हूँ ये उठा के मुझे वसीम सॉरी उठा कर मुझको मोइन और शोएब कह के गए थे ब्लाइंड फोल्ड करके क्रेन ऑब्वियसली बिकॉज़ देयर वाज नो वे यू गेट मी इन लोग जब perfect role बड़ा ये कट्टा बनता लेके था आते हैं ना छत पे रख देना वसीम भाई उनका परफेक्ट बना बनाया रोल है पंचिंग बैग देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से आपका भी बना बनाया रोल था रेफरी का कसम से मुसलसल आप रेफरी लगाया ना बस बोटाई नजर आ रही थी बोटाई नहीं नजर आई मुझे यू आर एक्चुअली वेयरिंग अ बोटाई weren't you मिसबा जरूरत रही है ना all right जी do we have the promo or have we lost the promo somewhere and here it is take a look फखर भाई हाउ डू यू डू पता चलिया उन्हें ओए कहाँ है और ये क्या है वो पतलून किधर है बेटा क्यों है परेशान ये है तेरा आखिरी इम्तिहान इट्स योर फाइनल राउंड चल पुत्र तेन में दसना वा आ जरा बोल पता लगती नहीं करनी कोई कुश्ती मुश्ती है चल चल भाई वसीम भाई बेग हुआ के शाबाश भाई शाबाश फाइनल राउंड का फाइनल एनालिसिस वो छुड़ा देगा इन द पवेलियन ऑन ए स्पोर्ट्स एंड ARY Zap। यार इसकी आंख पे लगी है नाक पे इस गेम में रिव्यू नहीं होता एक्शन रिप्ले होता है करके दिखावा प्लीज नहीं नहीं भाई आपकी मेहरबानी और कुछ नहीं हो सकता I love that evil laugh in the end that you had मुक्के के Wasim. बाद तू गिरा ऐसे जैसे कान उछरला बजा है एक चीज जरूर है हम लोगों ने बिल्कुल एक्टिंग नहीं की हाँ बिल्कुल Natural ऐसे है, ही। natural। नहीं हम लोगों ने एक्टिंग इसलिए नहीं की अजीज पारू पेज की तरह But I love the evil laugh that you have in the end. एक दफा दोबारा करके लाइव जरा सुना ना देना इट please. हैज टू बी माहौल माहौल में ही है हम और इससे ज्यादा कितना माहौल बनाएंगे हमने जितना पेविलियन में हमने माहौल बना दिया है कैमरा वो नहीं होगा नहीं माहौल होगा है ना बंदा सामने बैठा हुआ है भाई And को what पहले he's अपने done आप to you कैरेक्टर में ढालना पड़ता है ना 5 minutes ago आगे फिर अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि ये छोटे का रोल आपने शोएब को दिया था छोटे का काम करने के लिए सारे के सारे इसमें अगवा के दौरान मेरे अगवा में तो मैं तो होश में नहीं था सारे काम आपने दिए थे ये सिर्फ लगता ही छोटा है नहीं बहुत सारी चीजों में हमें अंदाजा हो गया है राइट दैट वाज द पंच एंड दैट्स व्हाई द वे फॉरवर्ड वाज सो लवली वसीम with that we're going to take a break here on the Pavilion but when we come back it's your favorite segment #Ask the Pavilion your questions your comments shared with us on this platform stay tuned we'll see you on the other side of the break Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम आप देख रहे हैं Sports and Sports in the ARY Zap app and with me in the Pavilion I've got Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan and the great Wasim Akram. Before we get cracking on #Ask the Pavilion, gentlemen, there have been some very serious developments during the course of the day today.
and we have found out that Pakistan Cricket Board has made some very serious changes. Babar Azam has stepped down from all formats of the captaincy. उन्होंने मुस्तफ़ी हुए हर फॉर्मेट से कप्तानी के बाबर आजम, और बोर्ड के अंदर भी रद्द-बदल हुई है बहुत सारी. Let's start off with you, Moin. Give us an update on what all has been happening at the cricket board today. Well, आज 2-3 न्यूज़ आई जिसमें जो कोचिंग स्टाफ था उनको मूव किया. मूव किया या फारिग किया? No, not फारिग. मूव किया towards the academy, जो NCA. So मिकी आर्थर एकेडमी जाएंगे? अब ये तो आई डोंट नो क्या तो बेसिकली फारिग ही हुआ ना, क्योंकि वो आएंगे तो नहीं तो पाकिस्तान. आई डोंट नो. बहरहाल उनका क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त चल रहा है, ऑनगोइंग है, तो उनको एक जगह से हटा के दूसरे डिपार्टमेंट में मूव किया. और मूव अच्छी है ये वाली, अगर अपने कोचेज आप डेवलप कराना चाहते हैं एंड इफ दे हैव. उनका आना भी तो ज़रूरी है ना, उनका आना भी तो ज़रूरी है. एक्चुअली ज़रूरी तो है. ये तो अभी लेट्स सी, अभी कोई स्टेटमेंट अगर मिकी की तरफ से आएगी देन विल कमेंट ऑन दैट. बट ये एक मेजर डेवलपमेंट है जिसमें बाबर ने स्टेप डाउन किया. ये एक बड़ी सीरियस चीज़ है. आगे अनाउंस भी हुए, 2 कैप्टन हमारे अनाउंस हो गए फ्यूचर के, जिसमें टेस्ट क्रिकेट में शान मसूद को आज अनाउंस किया PCB ने, एंड देन शाहीन शाह अफरीदी को फॉर T20s के लिए. So let's hope and wish them all the luck. I think they are the future prospect of Pakistan, especially Shaheen Afridi for the white ball. So here's my question. Let me bring this to you, Wasim. So हमने इस पूरे वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस के बारे में भी गुफ्तगू की कि उन्होंने न्यू बॉल के साथ वो मैजिक नहीं हमें नज़र आया जो शाहीन शाह अफरीदी का एशिया कप में भी, वो थोड़े से डिप्लीटेड नज़र आ रहे थे, उनकी एनर्जी लेवल जो थे वो नीचे थे. So कभी इट्स डू वी थिंक, बिकॉज हम ये सोच रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट कराना चाहिए, उनको हर मैच में नहीं खेलना चाहिए. अब अगर वो कप्तानी के रोल में आ जाएंगे तो wouldn't he be more fatigued than before? They announced him just for T20. Okay. And his record as a captain for PSL has been phenomenal. Yes. I think the best ever in the format of T20 format in PSL. Right. 2 साल consecutive जीता है. सो नेचुरली अगर बाबर के बाद किसी का नाम आ रहा था पिछले 3-4 महीनों से, वो इसी का आ रहा था T20 फॉर्मेट में. और आई थिंक हिज प्लेस इज़ इन द टीम स्ट्रेट अवे T20 फॉर्मेट में, and hopefully he'll get better. Every bowler, every cricketer, every sportsman go through phases. Yeah. Some good form, bad form. उस बंदे की वो तो ऑटोमेटिक चॉइस है ना टीम में. तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी परफॉर्मेंस को सामने रख के लीडरशिप स्किल्स आर डिफरेंट. So now the big question is to all of you guys, including you, I suppose, did Babar make the right decision? If I'm not wrong, they offered him. In fact, they asked him ke don't step down from Test cricket captaincy, but he said nahi. Is that confirmed? Well, I don't know. I've read it somewhere. Okay, because I haven't heard anything like that. So I've read it somewhere. I don't know कि वो सही भी है कि नहीं है. I don't know. But I suppose अगर आपने positively देखना है for Babar's sake, I suppose, because we don't want to lose him as a batter. He's a gem of a cricketer. He's the top batter in world cricket in all the formats. He's been through a lot off the field as well. Obviously उसके जो highs हैं as a captain, number 1 ODI team उसने बनाई पाकिस्तान की, led Pakistan to World T20 final in Australia, and he became the ICC cricketer to 2022. So ये उसके प्लस थे. तारीफ भी करनी चाहिए जो अच्छी चीज़ें. नहीं तारीफ नहीं. I think we should thank Babar Azam for his service. जहाँ बाबर से गलतियाँ हुई हैं on the way, but again you learn from everybody, make mistakes here and there. जान के कोई नहीं करता. As long as he's learned as a leader from his mistakes and move on to get freaking lots of runs. बहुत अच्छे टाइम पे ये हो गया. He stepped down, so now he can focus on his game and can win games for Pakistan. और overall उनका जो captaincy का tenure है, of course, जब आपको responsibility मिलती है, you make mistakes, you learn from them. लेकिन ये है कि अच्छे टाइम पे, बहुत अच्छे टाइम पे ये फैसला बाबर ने कर लिया. Let's wish him all the best. अच्छी परफॉर्मेंसेस दे और पाकिस्तान का नाम रोशन करे और अपना नाम रोशन करे. Apparently it's confirmed Babar was asked to keep the test captaincy, and so he said either I'm glad he didn't take the role because he just wanted to have some time off from this captaincy and concentrate on his batting and enjoy his cricket. I think वही वाली बात हम जो पहले भी एक दफ़ा कर चुके हैं वसीम, मोइन, हम लोग यहीं पे हुई थी कि अगर बाबर कैप्टनसी से अलग हो जाते हैं तो there would be a big opportunity
opportunity for him to do wonders like Virat Kohli is doing for Team India. You know, for Team Pakistan, he'd be able to perform more, be able to express himself more with that. Let me bring this conversation to you, Misbah. So ये तो हो गए कप्तानों का मामला. शान मसूद, इनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? Because he's got a very big Australia tour straight out. You know, just I've heard, I'm not sure is it true or not, कि उनको शायद 2 साल के लिए announce I have no idea on that. Is that but कप्तान को कम से कम भी नहीं साल 1.5 के लिए तो अनाउंस करना चाहिए, स्पेशली अगर आप टीम को रीबिल्ड कर रहे हैं. और ये नहीं हो कि ऑस्ट्रेलिया टूर में फड़कास पड़े, वहाँ सख्त टूर तो है, वी ऑल नो दैट, वी डोंट हैव टू लाई टू पीपल. उसके बाद अगर फिर ना सारे शुरू हो जाएं, चेंज करो या नहीं करो. एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए वसीम भाई, ये जो कैप्टन जैसे शाहीन बनाए या शान मसूद बनाए, ये जो भी आपके पूल ऑफ प्लेयर्स हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि सबको बुला के बोलें कि ये आप लोगों के कैप्टन्स हैं, ऑलवेज लिसन टू देम. Yeah, very important. It's very very important. और जो ये भी चेयरमैन हो, क्लियर, हाँ जो भी हो, ये क्लियर मैसेज जाना चाहिए सब प्लेयर्स की तरफ, सब प्लेयर्स की तरफ कि नहीं, ये आप लोगों के लीडर्स हैं, always listen to them. ये it's very very and important. also Hafiz also has been announced. Wish him all the very best, Professor. All the best. As a director cricket. Oh yeah, director cricket. So wasn't Mickey Arthur the director cricket? Yeah, he was director cricket before. But now they changed their roles, I think. They so said he has been demoted to another position and to go I think join academies. Academy. Right? Yeah. National way. हम उस बंदे को पूछ ही नहीं रहे जिसके पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है. As chairman technical committee, cricket committee, you should know all of these things, bhai. सही बात है. या 1 महीने से आपने इधर बिठाया, इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ आपसे. इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हो. Okay, so that that says a lot. So yes, Shan has been announced for 2 years, so that's a good. That is good. It's just been confirmed. Sign, yeah, just been confirmed. और शाहीन, any information वसीम भाई? कोई Shaheen का नहीं, Shan has been appointed captain till the end of the ICC World Championship 2023 till 2025. So अगर शाहीन को कैप्टन अनाउंस किया है, he should be captain till 2024 World T20. क्यों, मतलब हम लोग क्यों नहीं अनाउंस करते? But I think he's not going anywhere. 2024 का 6 महीने में है. हाँ, 6 महीने में. I don't think कि 6 महीने में चेंज कर देंगे उसको. I think he should be. I think the most हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए कि शाहीन शाह अफरीदी अपनी फिटनेस और अपनी वापस फॉर्म में आए. इर्द-गिर्द लोग हैं जो भी उसके एडवाइजर्स हैं, whoever they of course उसके well wishers जो close हैं, जो उसको एडवाइस करते हैं, they must know this is not league cricket. This is Pakistan cricket. It'll be a different ball game altogether. It'll be a different pressure on this young boy. So I'm sure he'll be able to handle that pressure. But somebody's got to be there to guide him during difficult times. So Mohammad Hafiz comes in as the director cricket. And Wahab Riaz, I think, as a chief selector. Okay, they haven't announced that. Have they? I think they have. Rumors हैं कुछ इसी तरह की जो आप बता रहे हैं. And Umar Gul bowling coach, they haven't announced. But that's Umar Gul. That's a rumor. They haven't announced it again, yet. Until it's announced, we cannot, say much about it. This is what we are hearing. Let's just keep it this way. कि ये हमें सुनने को मिला है. अब ये confirm तब होगा जब ये officially इसकी announcement आएगी. I think Shaheen Shah Afridi के लिए congratulations and best of luck, Shaheen. But we really Shaheen, for Shaheen, for Shaheen, please get back into your form. We need you fit and really, delivering on those 140 plus pace right up front. Shan के लिए मैं बात कर रहा था, Misbah. I want to bring this conversation. Will Shan get to have a say in the selection of the team that he's going to lead down under? I think so. I hope so. मेरे ख्याल में बगैर कप्तान के आप कैसे टीम को भी अनाउंस कर सकते हैं. और जैसे हम बात कर रहे थे, इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट. पहला टूर ही आपका एज ए कैप्टन सबसे मुश्किल जगह, टेस्ट क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया. एंड कीपिंग इन व्यू के कोई प्रिपरेशन नहीं है आपके पास अभी तक, कोई सेट बॉलिंग अटैक नहीं है कि टेस्ट मैचेस में हमारा कौन सा बॉलिंग अटैक होगा. फिर स्पिनर भी अभी तक नुमान ऑब्वियसली उसने परफॉर्मेंस की है श्रीलंका में, बट टेस्टिंग कंडीशंस होंगी उसके लिए, वहाँ जाके हमारी बैटिंग के लिए टेस्टिंग कंडीशंस होंगी. तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है. और ज़ाहिर जब मुश्किल चीज़ आती है तो उसके बाद एक तो आपको बेहतर हमेशा बनाती है एज ए लीडर. मुश्किलात में आगे जाके बाकी चीज़ें फिर आसान हो जाती हैं. कहीं पे भी खेलेंगे उसके बाद अपनी होम सीरीज जाके खेलेंगे up front, but it's a big challenge for him. It is in Australia. All right, with that, it's time for a break. We hashtag Ask the Pavilion का सिलसिला शुरू करना था, but we'll do it right after the break. Stay with us.
Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं the Pavilion और this is A Sports and Sports and the ARY Zap app and time for hashtag Ask the Pavilion. So let's start off. I have a question. Straight away. Afnan bin Zahid, उनका question है, question for all the panelists, is making Shan Masood test captain the right choice? Some people say Sarfaraz should have been made captain and Shan should have been vice captain so that he can learn from him. मैदान खुला है बहुत मैदान खुला. I think 4-day as a 4-day cricketer मैं समझता हूँ कि बेहतर है. He knows the game, sensible है and at least he can express also and not only these things. I think he's a wonderful cricketer. जो सरफराज की बात कर रहे हैं कि सरफराज I think he had his time. मेरा नहीं ख्याल है कि अब थोड़ा फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए थोड़ा सा. और यहाँ पे जो अनाउंसमेंट वाइस कैप्टन की नहीं हुई है. आई थिंक दे शुड अनाउंस द वाइस कैप्टन. आहिस्ता आहिस्ता वो एक दिन ही 36 बंदे ने अनाउंस कर देंगे. करना चाहिए. हाँ, आई नो दे विल बाय टुमारो. भाई ऑलमोस्ट आज 36 ही की हैं. आज 36 ही की हैं. 3 अनाउंस किए हैं आज. नहीं आप देखें ना, आपको पता लगे वो जो पूरी सपोर्ट स्टाफ था टीम के साथ सारे लिस्ट बन गई थी, टाइम खत्म हो गया था. ओके चलो श्योर. Okay. All right, Janab. Well, there's a lot of questions about the question. Actually, अगर आप भी देखें टाइमलाइन पे तो वही आ रहे हैं सारे. कि सारे वही का सवाल है. शान मसूद, बाबर आजम. इनसे भी लेना. मोबाइल की बैटरी. उनकी तो मोबाइल की बैटरी आज वो बहुत. तुझे ड्राइव फ्रूट खा लो ना मोइन भाई. तुझे ड्राइव फ्रूट. Okay, here we go. Rabia _X32. ओके राबिया, और आपका एक्स हैंडल भी वही, आपका नाम भी वही है. राबिया का सवाल आया है. जेंटलमैन सिटिंग हियर, just a few days ago a very important Pakistani former cricketer made some very derogatory remarks about a lady. Do you think that this is a condemnable thing? And some of the panelists were present at the event. I think, Rabia, you are talking about what Abdul Razak had to say about Aishwarya Rai. And yes, Shoaib Malik and Misbah were present there. What exactly happened? I believe that Abdul Razak has already apologized. I think we shouldn't talk this. मेरा नहीं ख्याल है क्योंकि ऑलरेडी इतना डिस्कस हो चुका है. Apologize तो कर लिए, but why say such a thing? I completely agree. If you were to ask our opinion here in the Pavilion, I have a question. Disappointment सबको हुई है. बहुत ही अफसोसनाक comments थे. Not appropriate किसी के लिए भी हो. I think सबको ये फील हुआ and rightly उन्होंने भी apologize किया और जो थे वहाँ पे उन लोग condemn किया. हर किसी ने almost जितने भी लोग थे. It is not on ऐसी कोई भी चीज़. I have a question from Ghazi. I know that a lot of you are watching this across the border. We and here in the Pavilion would also like to apologize for that. That's not the way things are supposed to be. We do sincerely feel bad for such. I suppose everyone remarks. should understand. किसी भी दोनों मुल्कों से, किसी भी मुल्क से आप किसी की चीज़ के खिलाफ बात करते हो तो आपके अलावा आपके मुल्क वालों का नाम भी खराब होता है. बिल्कुल ऐसे. So you got to be super duper careful what you say. Right. माफी मांगने की जरूरत ही ना पड़े. गलती हो जाए, genuine, understandable, माफी मांग लो. आफ्ताब सर, question okay. from Ghazi Khan, a very important question. Is Misbah coloring his hair daily? सुबह दोपहर शाम. कलर मेरा, दाढ़ी मेरी, तालू की है. So Ghazi साहब, yes. Yes. Not daily. नहीं वो बेसिकली गाजी साहब हैं ये. Ghazi साहब. गाजी साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि केड़ा एडा संगीन किस्म दा कलर ओदा नाम दसो. काला स्या. काला तूत. उन्होंने पता होना है. ऐडी गल कोई नहीं. He was wanting probably darker shade. या डार्कर शेड मतलब मैं नहीं लगता पता नहीं को बता दें भाई. आफ्ताब सरवर, आपका एक्स हैंडल है. आफ्ताब सरवर साहब, आफ्ताब सरवर, आपका एक्स हैंडल है आफ्ताब बुलैंड्स 3. जो You overthink stuff. First name is fine. आफ्ताब साहब, आफ्ताब सरवर's question is there has been there is another controversy brewing that Rohit Sharma throws a coin very far away from where it should land and that nobody is actually checking the coin. Who says कि कॉइन में कहाँ लैंड करना है? भाई ने मैं जरा चाहता जरा तुसी अपने टिपिकल साइड नु आफ्ताब सरवर साहब नु समझा दियो, because we keep getting this kind of nonsense here all the time that उसने कॉइन वो दूर फेंक रहे हैं तो पता नहीं चल रहा, तो यूं हो रहा है तो वो हो रहा है. ये किसने कहा है कि उसने उस पे कॉइन फेंकना है? वो तो स्पॉन्सरशिप के लिए, दिखाने के लिए. कॉइन कहीं भी चला जाए.
Yeah, it's I feel embarrassed. आफ्ताब सरवर 4 दफा बोल चुका हूँ। भाई कहा किसने? आफ्ताब सरवर साहब कह रहे हैं कि there is a controversy brewing कि ये बार-बार कॉइन दूर फेंकते हैं और एक Who said this? I don't know. आफ्ताब सरवर, I have a tweet from आफ्ताब सरवर. I'm reading the question. आफ्ताब से पूछे जरा। आफ्ताब साहब, आपको अगर पता हो तो यहाँ पर हमें लिख कर भेज दीजिएगा, फिर उसको हम डिस्कस करते हैं। ऑलराइट जनाब, आगे चेक करनी पड़ेगी क्रेडिबिलिटी। राइट जनाब, अब्बास बाबर, क्वेश्चन फ्रॉम वसीम सर, वी ऑल नो द एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस और अब जब हमारा वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है, कैन वी टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस? हमारी बॉलिंग बिलो एवरेज थी, क्या आपको लगता है कि धानी को ना सिलेक्ट करके पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की? अब्बास बाबर, धानी को मौका मिलना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, he should go on that tour and show his skills and be consistent in Pakistan team. Sure, absolutely, why not? He's got talent and he's been getting wickets in first class as well, and now is the time to seize this youngster and कि क्या परफॉर्मेंस है, क्या उनका हो गई। आफ्ताब सरवर साहब का जवाब आ गया। आपने पूछा था कि उन्होंने कहा सिकंदर बख्श साहब ने दूसरे एक और टीवी चैनल के ऊपर इस बात के बारे में बात की है। अब जवाब दें आप, आपने कहा था ना नाम आ जाए तो बताएं। जवाब तो बड़ी खप पाई सी 10 नाम 10 जवाब दे दें। कोई ऐसी बात नहीं, मेरा ख्याल है गलत बोला है उन्होंने, और जस्ट टू क्रिएट अ फर्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बिकॉज हर प्लेयर का, हर कैप्टन का अलग तरीका होता है कॉइन उछालने का, कोई करीब उछालता है, कोई दूर उछालता है, सो देयर इज नथिंग इन दैट, simple as that. I don't want to comment on this. I know, I feel very bad because, you know, again, जिस तरह आपने कहा ना वसीम, it reflects poorly on us. All these things that go. जिस तरह भी controversy है जी, बॉल में वेट ज्यादा होता है, एक साइड पे वेट ज्यादा किया हुआ है, इंडियंस को वो बॉल दे रहे हैं, I think all rubbish. They're playing good cricket and simple, we have to accept Just it accept and praise them and praise them. चीजें तो डिस्कस भी नहीं करनी चाहिए। Yeah, ऐसे And question apparently अब ये सिकंदर साहब ने, मुझे नहीं पता कहाँ पे किया उनका, ये जिन्होंने नाम भेजा है आफ्ताब सरवर ने, I have to find out where he said that. But if he said it, it's very unfortunate. But there are two Sikandar Bucks. Let me correct you, because one is the cricketer and the other one is the commentator. Okay, we'll find out which one we're talking about. With that, we're going to take a break here. When we come back, there's more on the other side. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं Sports and the ARY Zap app. I've got with me Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan and Wasim Akram. Hashtag Ask the Pavilion का सिलसिला जारी है. I've got another question here. उज़ैर मुगल का सवाल है. वसीम अकरम, आपसे उन्होंने सवाल किया है कि today New Zealand bowled short balls to Rohit while knowing he's the best puller of the ball in the world. What does this show? Lack of planning or panicked? Early on, आयर को एक ही short ball की है, क्यों? आयर को अर्ली ऑन when he came in, I think रोहित शर्मा को जब आगे उन्होंने किया, पड़कास पड़ी तो प्लान बी पे आए कि पीछे करके देखते हैं, पीछे भी उसने मारा। सो देन बॉलर को समझ नहीं आती कि उसने आगे करना है, पीछे करना है, नो मैंस लैंड जिसे कहते हैं, टू माइंड्स, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली रोहित शर्मा इज गुड एट इट एज अ बैटर, बिकॉज वो बॉलर को बौखला देता है। ये वही है ना, शेर सामने आ जाए फिर तुसी से कुछ नहीं करना, जो करना है जो करना है वो नहीं करना है। राइट, शेर दिल खान 7 आपका एक्स हैंडल है, आप कह रहे हैं यहाँ से पवेलियन सलाम फ्रॉम टोरंटो। वालेकुम सलाम, ग्रेट शो। हु डू यू थिंक कैन स्टॉप इंडियाज अनबीटन रन इन दिस वर्ल्ड कप फाइनल? साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया? बारिश ही रोक सकती है उनको अब तो। I think Australia, on a serious note, Australia can give them फाइटिंग तो होगी ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर फाइनल आता है, बट अगेन साउथ अफ्रीका इज आल्सो लुकिंग वेरी गुड। आई थिंक इट विल बी इम्पोर्टेंट, स्पेशली इन द फाइनल। टॉस बहुत इम्पोर्टेंट होगा, स्पेशली जिस वेन्यू पे खेल रहे हैं वहाँ पे। साउथ अफ्रीका के लिए एटलीस्ट, ऑस्ट्रेलिया शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ज़रूरी हो, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए तो अगर सेमीफाइनल जीतना है और फाइनल में भी अगर उन्होंने टफ टाइम देना है इंडिया को, पहले तो ऑस्ट्रेलिया को हराना है, जो कि आसान काम नहीं है, और फिर इंडिया के अगेंस्ट आई थिंक अगर कोई चांस एक बनता है उनका, तो वो पहले बैटिंग करके ही बनता है। एक चीज़ हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो उनको टफ टाइम दे सकते हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा सा रिलेटिवली इंडिया के जैसे बैटर्स या बॉलर्स जो हैं वो फॉर्म में हैं, उस तरह ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द टीम जो उनको टफ टाइम दे सकती है। Yeah, I have a question from Asim Rauf. Champions Trophy is held in 2025 and Pakistan team doesn't have any match till November 24th. How can we expect good team selection without seeing the performance? Asim, ये ऐसे कहते हैं planning.
कि 2025 में हमने एक चैंपियंस ट्रॉफी करानी है और पूरा साल कोई वनडे नहीं है हमारा। I think that is going to be the challenge. जो भी नई मैनेजमेंट है या to organize tours क्रेडिट अगर आया है हफीज़ के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। इफ़ यू वांट टू मेक अ गुड टीम तो आपको कहीं ना कहीं से ये वनडे मैचेस के लिए आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स करनी पड़ेगी। बायलैटरल सीरीज़ किसी से भी आपने करनी है, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट दैट, अदरवाइज फिर वही होगा कि हम एंड पे बैठे होंगे किस परफॉर्मेंस पे टीम सेलेक्ट करें, कहाँ एक्सपोजर मिला है। क्रिकेटर आया है, रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर आया है, हफीज इज अ सेंसिबल गाय, आई एम श्योर उसके दिमाग में ये ज़रूर चीज़ें होंगी और वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज ऐसा करेगा। Yeah, Professor, best of luck with that. Really, we're wishing you all the best and all the success. Big responsibility, and we are definitely very hopeful that with your capacity as an individual, you'll be able to deliver. Saad Pasha ka sawal aaya, salam panel. Pat Cummins is the only fast bowling captain amongst the top teams, and his individual performance has dipped since taking over as captain. Wasim Akram, Wasim bhai, as a fast bowler, does the captaincy have more of a negative impact? Not really. He did well in Test matches, didn't he? He's hardly, I think, captain. I think World Cup से पहले 4 या 5 ODI उसने कप्तानी की थी. So they are still in the semi-final. Yeah, and he's still learning. As a body language जिस तरह ball कर रहा है, I think as a captain he is doing very well. Yeah, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वसीम भाई, वो ये है बीइंग अ कैप्टन। जैसे उस दिन मोइन भाई ने बात की थी, सेक्रीफाइस एज अ लीडर, राइट। वो जॉश हेजलवुड नया बॉल करते हैं और मिचेल स्टार्क और वो चेंज पे आते हैं, ये है सेक्रीफाइस। तो ये उनकी एबिलिटी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और इन कंडीशंस में वैसे भी पहले भी अगर कप्तानी से पहले भी देखें तो उनकी जो वाइट बॉल से परफॉर्मेंसेस उस तरह नहीं है, वो उस तरह डोमिनेट नहीं करते। रेड बॉल में जैसे वो नंबर 1 बॉलर रहे हैं बहुत अरसा, तो मेन चीज़ कप्तानी है टीम को, द वे ही इज जस्ट टेकिंग टीम, दैट इज still, I mean, wonderful performance. All right, मुबश्शिर रहमान आपका अब्दुल मुबश्शिर आपका एक्स हैंडल है, आप कह रहे हैं मुबश्शिर रहमान, tomorrow there is a football match between Pakistan and Saudi Arabia. It's such a great moment for Pakistani football. I hope our legends can wish them good luck tomorrow to Team Pakistan for football. Yeah, yep, all the best. All the best. Wishes हम सब की तरफ से, all the very best. Saudi is one of the top sides, I suppose, in soccer. They love their soccer. All the top players of the world are playing there. So all the very best Pakistan recently team. Recently they beat उसको क्या नाम है जो टीम वर्ल्ड कप जीती है, अर्जेंटीना। उन्होंने वर्ल्ड कप में उनको हराया है, so all the best, great opportunity. Yeah, Saudi Arabia defeated Argentina, the world champions basically. I have a question from Saqib Mahmood. उनका question है, hi guys, great show as always. Do you think the Indian team is as good as Australia in 2000s and we are seeing start of another team domination in coming years? It looks like it, by the way. Yeah, it does. It does look like even it. much better. जिस तरह form में every individual, the top order batsmen देख लें, bowlers देख लें, even the spinners, I think the complete team जो है वो नजर आ रही है, बहुत convincingly matches जीते हैं। Yeah, I think they are the same. Yeah. लेकिन 99 की ऑस्ट्रेलिया की टीम, 2003 की ऑस्ट्रेलिया की टीम एंड देन 7, मेरे ख्याल में उन्होंने डोमिनेट किया है, पूरे दुनिया में किया है। They are on the same kind of same track. India is on the rise, yeah. All right, one more. This is from Rahul Antam. So okay, I'm just going to say Rahul. मैं आपका tweet पढ़ देता हूँ, so you'll understand who you are. Rahul says, hello from Chennai. Just wanted to say that you guys are simply adorable. Thank you, Rahul. Truly appreciate it. And most of all, truly enjoyed all your pictures and video from your trip in the sea. When will you share more about it? We will share more about it. Rahul, thank you very much. We appreciate all the love that we get from across the border, and keep sending us those messages. And we will share more about that trip, but be patient very soon. With that, we're going to take a break here on the Pavilion. See you on the other side. Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhar-e-Alam. Aap dekh rahe hain Sports and Sports in the Airways app. So, the news out of Mumbai today was that India have secured their place in the final. Rohit Sharma has one hand on the trophy
And with that, let's see what we have in store for you tomorrow. कल का मैच आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं. कल है दूसरा सेमीफाइनल, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. कलकत्ता से बराह रास्त 1:30 बजे हम आपकी खिदमत में कल सुबह 11:30 बजे दोबारा हाजिर हो जाएंगे फॉर द कवरेज ऑफ दिस गेम, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. And it's going to be a very exciting semi-final number 2. Let's see which team is going to go meet India in the finals on the 19th of November. And wow, this has been a really long World Cup. It is. Yes, it is. अच्छा मिसबा, ब्रेक के दौरान आप कह रहे थे कि आप 2-4 और सवाल करना चाह रहे थे हैशटैग आज द पेविलियन के, तो मैं वसीम भाई के पास भी एक आधा सवाल है, कह रहे आपके पास भी थे. अब तूने ओरिजिनल मुक्का खा लेना. और आप नीचे ना वो भी नहीं रखना जहाँ में गिरे थे. All right, guys, you know what? I know you are tired. सच्ची मुच्ची वाला मारना. चलो. All right, thank you, Shoaib. Thank you, Moin. Have a good evening, both of you gentlemen. Thank you, Misbah. And Skip, thank you, like always. Keep shining, keep rhyming, keep dropping those तू beats. राज लोगों ना गल कर ली, मैं वेट कर रहा हूँ तेरा. है मैं बहुत फ्लैश लग रहे हैं. मैं वेट कर रहा हूँ तो जाने का रैंडम लोगों से बात कर रहा होता है. नहीं, वो कहते हैं मैं रास्ता सवाल तो कर लेते वो जो आप कह रहे थे अभी करने का. वो कह रहे हैं मैं रास्ता पूछ रहा हूँ तो कहाँ से राज जाना है? दसना. कहते तेनों में राज दसना. आप लोग फिर इकट्ठे हैं दोबारा? Yeah. Okay, so good luck to you, सदर से जाइएगा. Wasim. That's all I can say. Good luck to you, Wasim. That's all I can say. मोइन भाई, रास्ता आप बता दीजिएगा. सदर से. रात में थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम होती है. मैंने कहा कि वो डंडा रखवाइए गाड़ी में. वो कह रहे हैं देखने में प्रॉब्लम रात होती है में ना थोड़ा जाते हुए प्रॉब्लम होती है. एंड मैं स्टेट वे गंदे नाले सुटांगा. जब बाय बाय करिए. Well, folks, you can tell that we are delirious now, which means we need to go get some sleep. With that, all I'll say is that it's Moin Khan. Good night.